basically we use it before singular or plural when it's denoting the whole group. But few of the times there might be some when we are talking about also a group, a large number of things, then also we use the. Okay, very rare. Okay, when we are talking about it, like collective noun, if we are talking about. Okay, the next one is when singular noun. Write it down. When singular noun is meant, M-E-A-N-T, meant to represent the whole class, here, everybody written? Yes. The cow is a useful animal. Here, the cow. Okay. The cow here, we are talking the cow in general. Yes? Every cow is important. Yes? So that's why we have put the here, because the cow is denoting the whole class of cow, not one particular cow we are talking about. Okay, and also like we talked about the cat. Yes, but there's an exception here. We do not use the, okay, when we are representing man and women's whole class. Like man, that is somebody you wrote, right? What did you write? Man's life. Okay, or when we are using a sentence, when we are denoting the whole, the mankind, okay, the mankind, जब ऐसा होता है the पूरे sentence में, तो we do not use the here. The mankind छोटा phrase है, छोटा सा है ना, छोटा सा idiom मतलब phrase जैसा है, but जब हम पूरा sentence बोलते हैं, wait, I have written it here. Yeah, like man is the only animal that uses fire. Man, here we are talking about the whole class, right? The whole man. So man is the only animal that uses fire, right? So इसमें क्योंकि भले ही man ने पूरा class denote किया हो, हम लोग उसे use नहीं कर रहे, the use नहीं कर रहे. What if it is in the sentence like the cow? The cow is the only animal that uses fire. That is correct. Like assuming cow uses fire and give it the only. Yeah, you can do that. You want to? Okay. Yes, there is somebody online here. Okay. So I was saying कि the हम लोग यूज करते हैं हमेशा जब किसी क्लास को डिनोट करना है, ठीक है? But few of the exceptions जैसे man and women, ये exception है. कुछ चीजें which see people say there's a very famous saying that English is a very funny language. Why? Because there are rules, like in maths there are rules, but बहुत कम ऐसा होता है कि we defy those rules, we go against those rules. But English में if there are rules, on the other hand we are defying those rules. So there are exceptions, जैसे कि लिखने वाला, because it is a language, right? अगर कोई लैंग्वेज ब्रिटिशर्स का लैंग्वेज है, वो काफ़ी वक्त से ऐसे यूज होते आ रहा है,
तो इस वजह से मैन एंड वुमेन को बहुत पहले से हम लोग इस एक्सेप्शन में यूज करते हैं कि मैन के पहले द नहीं लगाते, वुमेन के पहले व्हेन जब वो अपना पूरा क्लास डिनोट कर रहा है, व्हेन दे आर डिनोटिंग द होल क्लास, वी डू नॉट पुट द. बट ऑल्सो देयर आर इंस्टेंसेस, ओके, when you go through some of the articles, there are few of the instances, examples ऐसे हैं modern English में जहाँ पे आजकल इनके पहले द लगाया गया है. ओके, सो बट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, जब एग्जाम में आए तो उसके पहले when it is man and women, when they are denoting the whole class, do not put the, do not use the. समझ में आया? Got it? No, no. MEN इसमें यूज किया गया है. ओके, ऐसे when they are talking about those group of people, women या men in particular, they are denoting them, obviously you will use, right? Yeah, MEN. But MEN के पहले मत लगाना जब वो पूरे क्लास को डिनोट कर रहा है, क्लास को. बट जब एक पर्टिकुलर इंसान को कर रहा है तब कर सकते हो, जैसे कि उसका आप लगा सकते हो, उसका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है. फर्स्ट दिस वन, जैसे कि देखो इसमें अ वुमेन, is it true? A woman is more sensitive than a man. Okay, so now because here women is denoting the whole class, is she? Yes, women पूरा क्लास बता रही है, मतलब सारी women की बात कर रहे हैं हम लोग. Yes, class मतलब क्या? मतलब not only this women but also all the women. Yes, so यहाँ पे हम लोग the नहीं लगाएंगे. This is a very famous saying, isn't it? सब बोलते ना, क्यों a लगाया है, the क्यों नहीं लगाया? She is also representing a class. Yeah, got it? Understood? Confused? This is the only Yes. Women and man is the only exception where we don't use the. Okay? Man. Man is not in the whole class. Whole class, yes, that's very understood. Man can be a woman and a man both men. I did not understand. Man can refer to man. Okay, man is particularly a gender. Yes, a gender. See, what is happening here? This women, okay, we are only talking about class. ये क्या है? होल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. तो काउ क्या कर रहा है? होल क्लास के बारे में बात कर रहा है. सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है कि नहीं? ये भी सिंगुलर नाउन है सिंगुलर नाउन है. बट सिंगुलर नाउन के पहले यहाँ पे द लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि women and man के पहले हम लोग द नहीं लगाते. ओके, got it? The men, MEN. What you are asking, men, okay? ये तो क्लास है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी ग्रुप है, ये सिंगुलर नहीं है, ये ऑलरेडी प्लूरल है. It's a group, it's a gender, but we are talking about whole class now. When one singular is talking about whole class, this is already a class. Men, सब men की बात हो ही रही है इसमें, सारे जेंडर की बात हो रही है इसमें सारे विमेन जेंडर की बात हो रही है. इसमें
मैन इज द फर्स्ट एनिमल, उसमें मैन, सारे मैनकाइंड की बात हो रही है कि नहीं?